પાણીનું મામેરું ભરવા જતા અકસ્માત નડ્યો। વડોદરાના સાંઢાસાલ પાસે 25 લોકો ભરેલો ટેમ્પો કારને બચાવવા જતા પલટી ગયો, 14 લોકો ઈજાગ્રસ્ત। વડોદરા જિલ્લાના ડેસર તાલુકાના સાંઢાસાલ તલાવડી પાસે 25 જાનિયા સવાર ટેમ્પો પલટી મારી ગયો હતો। રોંગ સાઈડ આવતી કારને બચાવવા જતા ટેમ્પો પલટી મારી ગયો હતો। આ ઘટનામાં 14 વ્યક્તિને નાની મોટી ઈજાઓ પહોંચી છે। हाल तमाम इजाग्रस्तों ने सारवार अर्थे होस्पिटल में खसेड़वामां आव्या हता। मळेली माहिती मुजब जिल्लाना डेसर तालुकाना माणेकला गामना जशवंतसिंह फतेहसिंह परमारनी भाणी ज्योत्सनाबेनना लग्न होवाथी माणेकला गामथी सांढासाल रावजीभाई रमणभाई गोहिलने त्यां मामेरू लईने जता पियरियाओने अकस्मात नड्यो हतो। सांढासाल नजीक आवेली हरिया तलावड़ी पासे टेम्पो लईने पसार थता हता त्यारे सामेथी रोंग साइडे पूरपाट आवती कारने बचाववा जता इमरजन्सी ब्रेक मारता टेम्पोनुं टायर फाटी गयुं हतुं अने टेम्पो पलटी खाई गयो हतो। टेम्पो पलटी खाता अंदर बेठेलाओनी चीचियारीओथी वातावरण गूंजी उठ्युं हतुं। माणेकलाना परमार परिवारना अंदाजे 25 पैकी 14 जेटला मोसाळियाओ घायल थया हता। तलावड़ी पासे टेम्पो पलटी खाई गयो हतो तेवी वात वायु वेगे सांढासालमां फैलाता मोटी संख्यामां ग्रामजनो तलावड़ी खाते बचाव कामगीरीमां जोतराया हता। स्टार न्यूज़ 7 हमेशा सच्चाईनी साथे।